Assalamu alaikum students. My name is Ms. Sadia Qureshi and I am an assistant professor in English from the Greenland College Road, Bahawalpur. Today I have prepared a lecture for active and passive voices, and this lecture is specifically for the class of BS English Literature in our college. Before we go deep into the active and passive voices, first of all we know that what are the types of verbs that we need in active and passive voices and what is the simple formula of a sentence which will be discussed in active and passive voices. So the simple formula of a sentence is subject, verb, and object. Now the example is she walks to school. In this sentence, she is a subject, walks is a verb, and to school is an object. So the two types of the verbs which will be discussed in active and passive voices is transitive verbs and intransitive verbs. Now we go and look what are intransitive and transitive verbs. Transitive verbs are those verbs which are always requiring object, otherwise they are incomplete, vague, and meaningless. It means that those verbs always require an object in a sentence to give a complete form or a complete meaning. For example, he writes. Now, everybody who looks to this sentence will ask that he writes, but he writes what? He writes when? He writes how? So to complete this sentence, we need an object. So the complete sentence will be he writes a letter, a book, a story, or a play. Next is intransitive verbs. An intransitive verb requires no object. So, for example, if I have written an example like she weeps. So, she weeps is giving a complete sense in itself. It is a complete sentence which does not need any object. Go and see that what are the basic rules of making passive from active voices. So we look at the idea that subject and object will be replaced by each other. Hence, it is impossible to make passive voice from intransitive verbs because it does not carry any object at all. All the sentences which can be changed into passive voices will have a direct object to their main verbs. यानी अगर हम पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं एक्टिव वॉइस से तो हमें ये देखना होगा कि जो सेंटेंस है क्या वो सेंटेंस अपने अंदर इंट्रांसिटिव वर्ब रखता है या ट्रांजिटिव वर्ब रखता है अगर तो वो अपने अंदर इंट्रांसिटिव वर्ब रखता है तो इसका मतलब ये है कि हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते और अगर कोई सेंटेंस अपने अंदर ट्रांजिटिव वर्ब रखता है यानी उसके वर्ब के बाद डायरेक्टली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आता है तो हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आई राइट अ लेटर. So this sentence is an active voice which will be changed by passive voice in this form that I is a subject, write is a verb and a letter is an object. अब सबसे पहली बात हमने ये देखी कि एक सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ तो आप जब सब्जेक्ट को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ तो आ लेटर पहले आ जाता है और आई जो है वो चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पर सो अ लेटर इज रिटन बाय मी or there is another example that write a letter. So write a letter. In this sentence, there is no subject, but there is a verb and there is a object. So this verb and object will be replaced by each other in a sense that a letter is written. Next, there are many important things which you need to know. If you want to learn how to change passive voice, active voice into passive voice, you need to know these things, and these things are very important to note down. First of all, there is something that is important that subject is replaced with object or object is replaced with subject. Next is only past participle or third form of the verb will be used in passive voice. The third thing is helping verb are used according to the tense before the third form of verb. जाहिर है जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जा रही है तो उसके साथ हमने देखना है कि अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर लगा हुआ है तो वॉज और वर्ब में चेंज हो जाएगा अगर एक्टिव वॉइस में हैज़ एंड हैव लगा हुआ है तो वह हैड में चेंज हो जाएगा तो हमें थर्ड फॉर्म के साथ देखना है कि हमने हेल्पिंग वर्ब्स को किस तरह अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज करना है नेक्स्ट इज व्हेन सब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आते हैं इट्स ऑब्जेक्ट केस इज यूज्ड
तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, उसका सब्जेक्टिव केस यूज नहीं होता। अगर आप नीचे देखिए तो मैंने एग्जांपल्स दिए आपको कि सब्जेक्ट केस जो है वो वी, आई, यू, दे एंड ही है। तो जब आप ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे इसको तो आप वी को अस से चेंज कर देंगे, आई को वी से चेंज कर देंगे, यू को यू ही रहने देंगे, दे को देम बना देंगे, ही को हिम कर देंगे एंड शी विल बी चेंज बाय हर। Now, the last thing that is to be noted well is by is used before the object or agent framed by the subject. यानी जब हम by को यूज करेंगे तो हमने ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है या एजेंट है वो उसको किस तरह से फ्रेम करता है सब्जेक्ट के अंदर। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको आगे दे दूंगी। अब 6 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपने हमेशा याद करने हैं जब आपने किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। Now, the first rule is that some verbs are followed by their specific prepositions. यानी कुछ verbs ऐसे हैं जिनके साथ सिर्फ यही prepositions लग सकती हैं, इसके अलावा कोई और preposition नहीं लग सकती। They are like known will always be used with the preposition to. Same is the case with married to, and please will be also always used with the preposition with. इसी तरह displeased भी हमेशा with के साथ use होगा, satisfied भी always used with, and surprised will always at, astonished at, interested in, worried about। यानी अगर आप इन वर्ब्स के साथ किसी किस्म की कोई और प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं तो आपके जुमले की सेंस खराब हो जाएगी और वो इनकरेक्ट सेंटेंस कहलाएगा। रूल नंबर 2 is the remaining part after the changes in the written is written the same at the end of the sentence। यानी आपके पास एक सेंटेंस है, उसके दो हिस्से हैं, एक उसका हिस्सा एक्टिव वॉइस में आपने चेंज कर लिया है और बाकी पार्ट जो है वो एडिशनल है। तो जो एडिशनल पार्ट है वो एक्टिव से पैसिव में चेंज होने के बाद उसी तरह इन दी एंड एड अप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डू माई ड्यूटी वेरी केयरफुली। नाउ द पैसिव वॉइस इज माई ड्यूटी इज डन बाय मी वेरी केयरफुली। The next rule is rule number 3, and it says that not any in the active voice is replaced by no and is written in the form इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी अगर किसी जुमले में नॉट और एनी के वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो उन वर्ड्स को आपने किस तरीके से चेंज करना है कि आप उन वर्ड्स को चेंज करेंगे नो से और नो को लिख देंगे इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सो हेयर वी पुट एन एग्जांपल दैट ही डिड नॉट राइट एनी लेटर। So did and any, sorry, no and any are written in this sentence. So हमने इसको change कर देना है no से और no को in the beginning of the sentence में लिखते हुए we will change this active voice in the passive voice like this, that no letter was written by him. Rule number 4 is not is used after the helping verb in the negative sentences. अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट क्या होगा। नॉट हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर कैसे यूज होगा कि नॉट इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब इन द नेगेटिव सेंटेंसेस, हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही डज नॉट टेक एनी टी। ठीक है, ही डज नॉट टेक एनी टी। सो tea is not taken by him or any tea is not taken by him। तो not किसके बाद यूज हुआ, हेल्पिंग वर्ब is के बाद फौरन इस्तेमाल हुआ। रूल नंबर 5 is no passive voice is formed of the sentence where been already exist। यानी ऐसे जुमले जिनमें been लिखा हुआ है उनमें कभी भी आप उस जुमले को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उस जुमले में ऑलरेडी been लगा हुआ है। Rule number 6 is helping verb is used before the subject to make interrogative। यानी अगर किसी जुमले में हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है तो हमें ये देखना होगा कि हमें उसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो कब लगाना होगा, उसके सब्जेक्ट से पहले लगाना होगा ताकि हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, डज ही राइट अ लेटर। क्या वो एक लेटर लिखता है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम डज की जगह इज लगा देंगे और अ लेटर इज रिटन बाय हिम। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो गई और बाय हिम, ही की जगह ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। डज की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं और इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपने सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइसेस के अंदर चेंज कर सकते हैं। So my next lecture will be according to the tenses, that how we change uh, active voice into passive voice according to different tenses. So this is
it for this lecture. I hope that you're going to go through this simple rules which are there. These are 6 simple rules which you have to apply for each tense. Take care of yourself, and inshallah we are going to meet tomorrow with this new lecture. Allah Hafiz.